Is that visible? Is that visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, repeated times. Repeated times means when there is equal ranks, right? See what happened and how we can do these kind of questions. The formula for the same is what we do some correction factors in there. Leave it the correction factor. The formula for that is they have not mentioned the formula over here for that. Let me understand you what is that. Formula is because what is the formula for the rank? That is 1 minus 6 summation of d square upon n within bracket n square minus 1, right? Right? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Right. See, if there is equal ranks or repeated ranks, in that case, what we do? Formula for the same is 1 minus 6 within a bracket summation of d square, yahan tak to bhi tha, right? Plus 1 by 12 m square minus 1 by 12, that we can say m1 plus m2 minus 1 by 12 plus m3 and so on, right? Where m1, m2, m3 and so on are the repeated ranks. And in the denominator that is same n square minus 1. That's it. Okay, let me make one example and you can easily understand what caused these m1 and m2 and m3 all these things, right? Okay, let's do with this example. Given that psychologists wanted to compare two methods A and B of teaching, he selected the random number of 22 students. Right? He grouped them into the 11 pairs so that the students in a pair have approximately equal scores on the intelligence test. In each pair, one student was taught by method A and other by method B and examined after the course. The marks obtained by them are tabulated below. See, given this, first, second, third, fourth, there are 11 pairs, right? 11 pairs. Now, for the first pair, A and B, they are the two courses. I mean, the students are divided into two groups, A and B. For the group A, he taught them with the method A of teaching, and in B, method B, a method of teaching, right? See, first pair got by method A, he got 24 and B 37 and so on, like all this, right? So these are the scores. We have to find the rank position. Got it? Now, come to this. Okay, let's do with the first X series, right? We have to rank. I already told you that either on increasing order or in decreasing order.
in this example, the maximum one is what? 30, right? 30. Now, see in this example, in this series, 30 comes to twice. 30 comes twice, right? So that means we have to rank first for the 30. We have to give the rank 1 to both 30s, right? Now, but what happened? Rank is always like either rank first or second. What happened in this? This is 30, this is 30. If I give this 30 to rank 1, then I have to give this 30 to rank 2, right? Is this clear? Yes, sir. Now, but these two numbers are same. So that means they have to give us the equal rank, right? We don't have to give the partiality for these 30 or that 30, right? So that means we have to give the equal ranks. So what do we do in this case? This is rank 1, this is rank 2, right? We make the average of these two, 1 and 2. Average is what? 1 plus 2 divided by 2. 1 plus 2 divided by 2. It comes to be a 1.5. Yes, sir. Yes, sir. Right. So what we do, we give 1.5 rank to this number, this 30, and 1.5 rank to this 30. Is that clear? Right. Now, Yes, sir. what happened to this 30? 30 comes twice. 30 comes twice. So in this case, the value of M1 is 2 because it comes twice. 2 ranks are repeated. So M1, the value of M1 is 2. So in this case, M1 is 2. Got it? Now, in this series, 2 ranks are consumed. 2 ranks are consumed. The next is we have to give the rank 3. Now, check in this. After 30, the last one is 29. So we have to give rank 3. Next, 28, 4. Next, 27, 5. सर सर यहाँ पे 29 पे 3 क्यू 29 पे तो 2 होना चाहिए किस पे? सर ये 29 जो है 29 पे आप रैंक ऑफ एक्स 3 सर मतलब 1 2 3 3 2 हाँ यस तो सर 29 पे रैंक 3 तो आया है. 29 पे रैंक 3 आया ना. ये 3 सर 29 पे 3 हो ना 3. हाँ 3 रैंक थर्ड. सर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 3 2 5 प्लस 1 6 बाय 3 2 तो 2 होगी ना नहीं नहीं नहीं. सी अभी क्या हमने किया इन दिस केस 30 और ये 30. एक का रैंक 1, यस एक का रैंक 2 था, राइट? तो यस हमने क्या किया, यस rather than रैंक 1 और 2 देने की बजाय मैंने उसकी एवरेज निकाली 1 और 2 की. दैट कम्स टू बी 1.5. सो आई गिव 1.5 टू दिस नंबर्स, राइट? अब मेरा 1 रैंक और सेकंड रैंक, ये दोनों रैंक मेरे कंज्यूम हो गए, खत्म हो गए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी असाइंड दीस 2 रैंक्स 1 और 2. मैंने एवरेज दिया उसको, बट मैंने 1 और 2 को खत्म कर दिया. वी कंज्यूम दिस. So the next one is third rank. So I have to give the third ओके number. So 29 को मैंने third rank दे दिया, फिर 28 को 4 दे दिया, 27 को 5 दे दिया, right? The next one is यस सर ओके 27 के बाद आ गया 24, 6. फिर उसके बाद 27, then 20 के बाद 19. Now here 19 comes twice.
ये 19 है और ये 19 है, तो एक को रैंक जाएगा 8, एक को जाएगा 9, एक को 8, एक को 9। सो कितना हो गया इनकी एवरेज 8 और 9 की 17/2। 8.5 आ गया। यस सर, यस सर। सर यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं 29 दो बार होगी, तो तब वो 29 को 2 सर मैं बोल रहा हूँ थर्ड रैंक का 29 जो ची है वो माने थर्ड एंड फोर्थ दोनों बार 29 आ गया, तो फिर तब वही एवरेज ही ओके ओके जो भी रैंक आया होता, थर्ड और फोर्थ आया होता, तो थर्ड फोर्थ जो भी आता, we'll take the यस average of that and assign the average of whatever the average we got, right? So ओके सर। right. So similarly, in this case, 19 comes twice, right? So the average for that is 9, 8, and 9. So the average of 8 and 9 is 8.5. So we assign 8.5 rank to both of these numbers, 8.5, 8.5. यस Right. सर, यस। So in this case, 19 comes twice. In this case, 19 got twice. So in this case, M2, the value of M2 is again 2. Okay. Again, यस 2. Okay. Now, the next one is we consume 8 and 9. The next one is 14. उसको 10 दे दिया. Okay, come to the Y series. Y series, the maximum one is 37. We assigned as a 1. Then 35, 2, 2 27, 3, 27 and so on. So again, 16 yeah, in this case, 9.5, 9 that this 16 comes twice, right? So in yes again, same with the average, we assign the rank and 9.5 to both of this number, right? But in this case, again, the entry is 2. So what happened here? So we got three values, M1, M2, and M3. The value of M1 is 2, again M2 is 2, M3 is 2, right? Because two numbers are repeating, right? yes sir Now, this will happen if the number is repeated 3 times. In that case, the value of M is 3, right? Got it? Now, so what we do the D is rank 1 minus rank 2, that D yes is sir the square of this number, that total of D square, we get 225. Now come to the how we calculate. Formula is 1 minus 6 summation of D square plus 1 by 12 M square minus 1 plus 1 by 12 M2 square minus 1 plus this. Now see, 6 summation of D square, the value of M. This is formula for M1, M2, M3, right? So he generalized right the M. Now plus M1. M1 is what? 2. So we write 2 square minus 1 by 12. ये आ गया यहाँ पर. Got it? yes sir yes Similarly, M दोबारा 2 है, वो 2 फिर दोबारा रखा, सेम ही आएगा. M3 भी 2 है, तो वो 2 रखा. In case अगर हमारा M3 आता, तो in that case we put 3 here. So 3 का स्क्वायर आ जाता 9 minus 1 -1 by 12 ऐसा आ जाता, right? Upon n cube वो is same upon n square minus 1. N is 11, so 11 square minus 1, right? So on calculating these numbers, ये calculation करके इतना आ गया answer. Clear बेटा? yes sir This is what is sir in is number of rank, total rank total. हाँ, total numbers में.
Your rank is finished. Now we start with the regression. See, what is regression? But we done in this correlation. What was that? Correlation. Sir. What was correlation? So what is correlation? कोरिलेशन क्या था? एक दो डेटा के बीच में एक वैल्यू था, राइट? Yes, sir. Which tell us that is there any relation between these two data, right? Now that is the relationship, either positive or negative or no relationship, right? If it is positive, then it is we called positive correlation. That means if one value is increasing, second one is also increasing, then it is positive correlation. If one is increasing, second one is decreasing, the vice versa, then and that is negative correlation, right? So what happens in the correlation? It gives a constant value for that, right? Now, Yes. Sir, series is a example of correlation. correlation अभी तो किया सारा, वही एग्जांपल ही तो आ रहे हैं. सर मतलब एनी पेशेंट का वेट एंड कोलेस्टेरॉल इक्वली, वेट एंड हाइट. हाँ, मतलब हम दो डेटा के बीच पे हम उसमें है ना, दो डेटा के बीच में कि उसमें Yes, sir. वैल्यूज आ रही है, राइट? Yes, sir. तो The two continuous characters are measured. क्या? सर मतलब मैं बोल रहा हूँ two continuous characters are measured in a series. It's called correlation. हम दो डेटा के बीच में रिलेशन निकालते हैं. क्या तुमने क्लास के डेट किसके लास्ट क्लास की थी तुमने? ओके. हाँ सर. हाँ, तो उसमें सर एक्चुअली हाँ उसके पास दो डेटा के बीच में रिलेशन, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, राइट? So what Yes, sir. happens that is we get some constant value which lies between -1 to +1, right? Yes. अच्छा, अब कोरिलेशन में क्या था, हम एक रिलेशनशिप निकाल रहे हैं. ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए क्या एक सीरीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है तो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? तो मतलब कुछ एक रिलेशन है. In regression we find a mathematical relation between
those two series. Okay. Right now, so that is a mathematical measure of the ability to do a model, right? सर वो दो जो मेजरमेंट वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं ना? पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन। पॉजिटिव नेगेटिव तो एक वैल्यू आती तो पता चलता ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस सर। Right, but if we are finding the relationship, mathematical relationship between those two series, so in that case, how do you know that it is negative relationship or positive relationship, right? So यस सर। it is only a mathematical equation. That's it. Got it? यस सर। Now, line of regressions. In general, we find the relationship in form of a straight line. Straight line is what? It is a linear straight line, linear equation, right? So linear equation is what? Linear equation is linear means one. So the variable with the power one is the linear, right? So we got the linear equation of that two variables. So that linear equation is called as a regression line or regression equation, right? Now, so generally, what we do, we have two variables, x and y. We have two variables, x एक्स and एंड वाई। y. So what we do, we have the two regression equations. That is a linear regression, x on y, and the second one is linear regression, y on x. Right? ओके Or what is that? Y on x and x on y. See. That we do with the first one, y on x. The regression line, linear regression, y on x. Right? So, see, initially I told in the correlation that the first method, that is a scatter diagram, right? यस सर। So what we do in that, I told you that if it is perfect, that it goes in the straight line, all the points come in the straight line. If it is positive correlation, or we say it's like a high degree or low degree, whatever it is. So what I have done, I make an imaginary line and all points, if it is a high degree, then all points come very close to that straight line. If it is low degree, then the points are a bit far from that, right? यस सर। So it's a kind of that imaginary line. We have to find that imaginary line. Right. So what happened in y on x? Y on x is kind of this line, y is equals to a plus bx. Y is equals to a plus bx. A and b are the constants. We have to find a and b, right? So in this, we say that x is an independent variable. X is independent variable. So if we put value here, relationship is what? A plus bx. We have to find the value of a and b. These are the constant value. Okay. So in this case, x is an independent variable. If we put the value of x here, then we got the value of y. If we put the value of x here, then we got the value of y. वाई। So the value of the y is dependent upon x. Value of y is डिपेंड dependent अपॉन upon एक्स। x. So we say that x is a dependent variable, ओके right? Okay. See, there are the various methods to find the regression line. One of the method is this, right? That is summation of
y is equals to na plus b summation of x upon xy a summation of x plus b summation of x. Yeah. On solving these two equations, we get the value of AXI. Right now, the easy method is what they have make the convenient method for us. Abhi main show bhi later on I'll tell you what was that formula. Right. So सर yes. सर रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो डिपेंडेंट वेरिएबल था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो इसके साथ रिलेशन है ना हाँ, जो तुम रिसर्च मेथोलॉजी में अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का निकालते हो, लेट मी टेक एग्जांपल, जैसे आपने इन फार्मास्यूटिकल you do the research for that, right? So you have for example, you have 20 values. You collect the data of the 20 values. You are doing a research, right? You got a 20 values, or yes, 20 values भी बढ़े, you got a 10 values, right? So Yes. उस 10 वैल्यू पे फॉर एग्जांपल आपने कुछ पोटेशियम नाइट्रेट इतना डाला, दूसरा इतना डाला, राइट? सो यू हैव कि भाई इतना एमएल मैंने ये लिया, इतना एमएल मैंने ये लिया, देन द रिजल्ट इज दिस, राइट? सो व्हाटएवर इट इज, सो आपने अलग अलग 10 वैल्यू ले ली, भाई पोटेशियम पर मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, कम कर दिया, उससे कुछ दूसरी वैल्यू भी बढ़ा दी, कम कर दी, जो भी है, राइट? सो या उसमें जब रिएक्शन करते हैं तो आपका ये इतना प्रोडक्ट निकल के आ रहा है इतने एमएल में. सो इन दैट केस फिर आप 10 वैल्यू के बाद आप एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं इसको इतना मटेरियल डालूं, इसमें इतना एमएल, आई पुट दिस क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी एंड दैट, सो व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट? सो इन दैट केस आप रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से वो निकाल सकते हो. यस सर Now, see, there is another method of this. Another method क्या? That is same वो derivation करके बनाया होता है. But I'll tell you the equation. वो क्या equation होती है? So for the regression equation, y on x, the value is, right? ये value याद रखो. Y minus y bar r sigma y upon sigma x into x minus x bar, right? So y bar is mean of y series, y is the mean of y series, r is the correlation, this is standard deviation of y, standard deviation of x, or x minus x bar, right? ठीक है? यस सर ये जो होता है ना, ये r सिग्मा सिग्मा 1 सिग्मा एट, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट. रिग्रेशन कोफिशिएंट, दिस सर आर सिग्मा वाई आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये पूरा नंबर, ओके ये रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स. सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, ये वाई ऑन एक्स वाली लाइन है ना. यस सर यस सिमिलर वे में एक्स और वाई भी सेम हो जाएगी, बस रिप्लेस कर देना एक्स को वाई को बस कर देना, राइट? अभी ठीक ये बिल्कुल दूसरी सिमिलर वे में आ गया ना, ये एक्स और वाई वाली, ये दैट्स रिप्लेस. क्लियर? एक एग्जांपल कर लेते हैं. क्वेश्चन running data from the two regression. ये करते हैं,
ये रिग्रेशन इक्वेशन पी वाई और एक्स को ऐसे लिखते हैं, पी वाई और एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला बना दिया हुआ डायरेक्ट, n summation of xy minus summation of x upon summation of y upon n summation of x square minus summation of x whole square. Similarly, regression equation x और y के लिए सिमिलर वे में नीचे x की जगह y रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है ना, बताया था अभी, बी आर सिग्मा y अपॉन सिग्मा x बी एक्स वाई सिग्मा, ये इसकी जगह ये पूरा निकाल दे। अगर मैं ऐसे लिखता तो इसमें क्या था, आपको कोरिलेशन भी निकालना, आर की वैल्यू निकालनी पड़ती कैलकुलेशन से, फिर सिग्मा एक्स निकालना पड़ता, सिग्मा वाई निकालना पड़ता, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, राइट। सो व्हाट वी डू, हम इस फॉर्मूले से सीधा रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल देते, खत्म। क्लियर बेटा? अच्छा, उसमें क्या है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दोनों को, तो सिग्मा वाई कट जाता है, सिग्मा एक्स कट जाता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बच जाता है। क्लियर? सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और आर इसका स्क्वायर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस दिस। सो इन दिस केस, if both regression coefficients are negative, then R is negative. If both are positive, then R is positive. How about this? A panel of judges A and B graded 7 debaters are independently awarded the following marks. A debater दिए में 7 debater, उसको marks दिए हुए A और B, right? Judge A और B, कितने? And अभी कितने debater है? 7. And A debater was awarded 36 marks by Judge A. Judge A ने 8 debater था, उसको 38 marks दिए, 36 marks दिए। तो while Judge B was not present, Judge B नहीं था वहां पर। If Judge B was also present, how many marks would you expect? अगर Judge B होता तो वो कितने मार्क्स उसको देता? ठीक है, ये 7 to 7 ये दे दिया x और y, ओके। वो इसमें x और उसको u से रिप्लेस कर दिया, u निकाल दिया, x माइनस a, एज्यूम इन ना, एज्यूम इन फर्स्ट से ले लिया 35 ले लिया, इसमें नहीं है फिर भी ले लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो, एक एज्यूम इन मानने का एक तरीका और भी है। इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें मीन चाहिए ना, x माइनस वाई माइनस वाई बार, तो मीन तो हम सिंपली x सीरीज को ऐड कर दो, x सीरीज को ऐड कर दो, ये जो x सीरीज है इसको पूरे को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 7, वी गेट द मीन। सिंपली y सीरीज को ऐड कर दो पूरा, डिवाइड बाय 7, वी गेट y बार, ठीक है। yes. तो जो भी x बार y बार आ जाता है ना वैल्यू, जो भी x बार y बार आता है, जो हम एज्यूम मीन जो लेते हैं ना, वो उसके नियर बाय वैल्यू ले लेते हैं। Why we take the near by value, उसमें इजी होता है कैलकुलेशन का, रिजल्ट हमारा ऑप्टिमम आता है, अच्छा आता है उसके पास की वैल्यू में, क्योंकि एज्यूम मीन और मीन के पास की वैल्यू तो सही है। अगर आपका मीन नहीं आ रहा है तो उसको भी ले, फॉर एग्जांपल इस केस में ना, क्योंकि यू 0 आ रहा है ना, इस केस में ना आपका मीन ही 35 आ रहेगा, आप करके देख लेना। मीन yes, sir, 35, ठीक है, तो हम 36 35 जो भी है,
तो 35 हाँ तो 35 ले लिया, आप 34 भी ले सकते थे देखकर, अगर आपको नहीं समझ आती तो आप 34 ले लेते, ठीक है। 36 आया तो 35 ले लिया, और 35 आया तो 36 भी ले, कुछ भी ले सकते थे, बट इन्होंने 35 भी ले लिया। इस केस में हमारा u का समीशन 0 आ जाएगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे y सीरीज, फॉर द y सीरीज में वही इसका टोटल निकाला, वही इसका निकाला, जो भी आ रहा होगा मुझे पता नहीं है, मैं इन्होंने ले लिया 30, निकल गया 30, ठीक है। देन u स्क्वायर, v स्क्वायर और uv, ये निकाल दिए इनके टोटल। हाँ एक्स बार वो इन्होंने इस फॉर्मूले से किया है, 35 आ गया था, ठीक है। सिमिलरली वाई बार भी इस मेथड से किया ही है, आपको डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नाउ समीशन ऑफ रिग्रेशन क्वेश्चन y ऑन x, फॉर्मूला लिखवा दिया मैं, ये फॉर्मूला होगा, इसमें वैल्यू पुट की, ये कांस्टेंट आ गया, राइट। इक्वेशन y ऑन x की थी y माइनस y बार, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x माइनस x बार, इसमें पुट किया सिंपली रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखो हमें क्या था, सी y, हमने इसमें y ऑन x क्यों निकाला, देखो अब क्या था इस क्वेश्चन में, उसने कहा था x की वैल्यू दी हुई है, यही कह रहा है ना, अगर इफ जज a अवॉर्डेड एज 36 मार्क्स, ठीक है, जज a मतलब ये है ना, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है 36, एडिशनल वैल्यू 36, और हमें क्या निकालना है y। अब इसमें x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, यस, ठीक है। सो दैट मींस वी हैव टू फाइंड द y ऑन x, y ऑन x निकालना, हमने फिर y ऑन x निकाल दिया, इसमें y ऑन x निकाल दिया, इसमें पुट किया, अब y ऑन x यही आएगी क्वेश्चन, फिर लास्ट में उसने x की जगह पुट कर दिया, ये तो पहले ये आ गई जाता है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। अब क्या किया इसने, x की वैल्यू 36 पुट की, 36, फिर इसमें पुट कर दिया 36, हाँ? तो इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस। तो इसका मतलब अगर जज ए ने 36 मार्क्स दिए हैं उसको, तो जज भी कितने देगा, 33 33 33, क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। यस सर, यस सर। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दिया हुआ है, ऐसी ही सिमिलर। अच्छा इसमें जैसे इसमें कह रहे हैं ये टेस्ट स्कोर्स और सेल्स जो भी दिया हुआ है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट स्कोर्स एंड द सेल्स, कोरिलेशन निकालना है, फिर डज इट इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस इज द लोएस्ट, एक्स बार और वाई बार करके निकाल दिया। अब ये देखो अभी ऐसा भी आ जाता है रिग्रेशन इक्वेशंस, ठीक है। अब कभी भी आपको ना रिग्रेशन इक्वेशन दे देगा, तो ठीक है, उस रिग्रेशन इक्वेशन से हमें कोरिलेशन निकालना होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है, वो भी देख लो। ऐसे ये सब कुछ आ जाता है, कोएफिशिएंट, कोरिलेशन। हाँ बस जो मैं बता दूंगा अभी लास्ट में कि क्या इसमें चल रहा है, इस कोरिलेशन इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब मैंने करवा ही रहा हूँ, आज मैं शेयर भी कर दूंगा नोट्स। सर ये शेयर कर देंगे तो अच्छे होगा, क्योंकि डिटेल्स तो नहीं मिलेगा ना। हाँ मैं ये दे दूंगा, ये मैं आज दूंगा, उससे पढ़ना सब, ठीक है। ओके सर। अच्छा से अब ना ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेटा इस तरह दिया है, सेल्स दिया है, मीन्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है, एस्टिमेट द लाइकली सेल्स फॉर द प्रपोज्ड दिस, राइट। सो आप देखो सेल्स को हम x ले लेते हैं, हाँ, और ओके सर। को y ले लेते हैं, राइट। तो ये x बार दिया हुआ है 40, y बार दिया हुआ है 6, x बार 40 आ गया, y बार 6 आ गया, ठीक है। और नाउ ये सिग्मा x दिया हुआ है 10, सिग्मा y दिया हुआ है 1.5, ठीक है। r दिया हुआ है दोनों का 0.9। अब ये x और y वाली इक्वेशन होती है, यस सर। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी, वी गेट वही x और y इक्वेशन, ठीक है। यस सर।
वो सिमिलरली वाई ऑन एक्स भी सिमिलर वे में निकल आएगी। अब देखो, अब उसने क्या बोला था लास्ट में, एस्टिमेट द लाइक्लीहुड ऑफ सेल्स, सेल्स निकालनी है जब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हो 10 करोड़, करोड़ में ना 10 करोड़, ठीक है। तो मतलब हमें इसमें वाई की वैल्यू दी है 10, हमें एक्स निकालना है, तो वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई में वाई की जगह में 10 रख दिया, 10 रख दिया, तो सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई 64, तो मतलब 64 करोड़ क्या हो गई, सेल हो गई। Y dependent by X. सिमिलरली वाई ऑन एक्स में निकाला, उसमें भी ऐसे था कि सेल का टारगेट 60 करोड़ अगर हो तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, तो उस केस में हमने एक्स 60 दिया हुआ है, तो एक्स 60 पुट किया इधर आगे, तो उस केस में बजट होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट का 1 करोड़। अच्छा, ये रिग्रेशन हमारा खत्म हो गया। अब मैं आज ये कुछ वैल्यूज शेयर करके, कुछ नोट शेयर कर देता हूँ, तो ये कर लेना, थोड़ी कर लेना, ठीक है। ओके सर। तो हमारा ये खत्म हो गया, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म ही है। तो बाकी जो मैंने पढ़ा है ये बुक भी आज मैं ये भी शेयर कर देता हूँ, इस बुक से पढ़ते रहो, एग्जाम्पल में मिल जाएंगे सॉल्व, यस सर, यस सर, यस। तो इट हेल्प्स यू, ठीक है। और इसी में नोट्स वोट्स बाकी जो टॉपिक है वो नोट्स एक बार रीड आउट कर लेना, और अगर तुम्हें लगे कि कुछ और भी है कोई मतलब कुछ डाउट आउट है तो फिर क्लास रख लेंगे। क्लास में आपके एग्जाम्स कब तक हो? हाँ सर। सर आप ना, सर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा आता है ना, वो जो एग्जाम्पल की तरह वो क्वेश्चन। आप सुनो सुनो सुनो, आप ना अभी बोलना कॉलेज में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आप बोलो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है ना वो लो, और वो पढ़ लेना। उसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो थ्योरी के क्वेश्चन इसमें देख लो, नहीं तो गूगल कर लेना, मिल जाएंगे, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, जो भी 2-4 पेपर मिलेंगे वो कर लो, दैट्स इट, ठीक है। ओके सर। चलो देन, मैं यही सोच रहा था कि उसमें जो आपके जो क्वेश्चन पेपर तो आप ले लो, कॉलेज में किससे बात करते सर कॉलेज टॉपिक पर, हो? हाँ, टॉपिक। तौफीक से है ना, तो तौफीक को बोलना वो दे देगा, तौफीक ओके को सर। बोलो। हाँ, तौफीक आ गया हुआ है यहाँ पर, सर तौफीक आ गया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आप तौफीक से बात करना, उसको बोलना सर ने बोला है कि प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर जो है ना वो दे देगा, ठीक है, ठीक है ना, और उसको ठीक है सर। कर लेना। और ये बाकी ये मैं अभी अपडेट कर दूंगा, तो इसको कर लेना। सर ये स्लाइड शेयर कर देना प्लीज। हाँ, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा। चलो देन, आपके एग्जाम है कब, मैंने बताया नहीं आपको? सर एंड ऑफ द जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, अभी तक ठीक नहीं हुआ। ओके, ठीक है, देन आई विल शेयर यू, मैं भी ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।